बुझिले ମୁଁ ଚାଲିଛୁ ତ ଦେଟା ମୁଁ ପୁରା ଥିଓରିଟା गुड आफ्टरनून एवरीवन वेलकम्स टू बिरेन्स एकेडमी आज आम डिस्कस करवा बेसिक कॉन्सेप्ट थियोरी क्लासेस ओके पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लियर विथ क्वेश्चन डिस्कशन कर ओके चलो तो आज आम टॉपिक स्टार्ट करवा बेसिक कॉन्सेप्ट टुडे टॉपिक विल डिस्कस फर्स्ट वर्ड basic concepts of chemistry. Basic concept of chemistry, first we'll discuss what atomic mass. First we'll discuss what atomic mass. Atomic mass means what do you mean by atomic mass? How can say atomic mass means what? Mass of an atom. Mass of an atom is called what? Atomic mass. For example, consider we take oxygen. Oxygen is the what? Atomic number 18. 8 mass number is what? 16. That means oxygen, this is the what? Name of the element. Name of the element. And 8 is the what? Atomic number. Atomic number. And 16 is the what? Mass number. Clear समझते ताको रिटर्न फॉर्म रे हमें केमती लिखिबा ना x z a x टा कोन कहउची नेम ऑफ द एलिमेंट. नेम ऑफ द element. Z is what? Atomic number. A is what? Mass number. So how can you calculate mass number? How can you calculate mass number? Yes, mass number A equals to number of proton plus number of neutron, and atomic number Z is equal to what? Number of proton equals to number of electron. बुझिए. So how can you calculate जदि क्वेश्चन पछाड़ियो how can you calculate the number of neutron? Neutron केमती काढिबा? Neutron केमती काढिबा? के कहइबो? Yes, neutron is equal to A minus Z. A is the what? Mass number. Z is the what? Atomic number. Clear समझते? Okay. Next is what? Molecular mass. Molecular mass means what? What do you mean by molecular mass? Molecular mass is the sum of atomic masses of the elements present in a molecule. गोटे molecule रे गोटे मॉलिक्यूल रे केते नंबर ऑफ एलिमेंट्स अछंती से एलिमेंट्स मानकर सम ऑफ द एटॉमिक मासेस को कोन कहै छै ना मोलिकुलर मास. बुझियला. तो मोलिकुलर मास मींस व्हाट? इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल. क्लियर? दैट मीन दिस इज कॉल्ड व्हाट? मोलिकुलर मास. कंसीडर वी टेक एग्जांपल. Consider we take example is what? Sulfuric acid, H2SO4. In sulfuric acid, the sum of all the atomic masses of the elements present in a molecule sulfuric acid, how much number of hydrogen is present? 2 number of hydrogen. What is the atomic mass of hydrogen? 1. Then plus sulfur, how much number of sulfur present? 1. 1 into sulfur atomic mass kete achi? Kete? 32 plus 4 into kete? 16. Next is what? 2 plus 32 plus 64. Total is what? 98. 98 U is the what? Molecular mass of the what? Sulfuric acid. Clear? Molecular mass means what? Sum of atomic masses of all the elements present in a molecule. This is clear, everyone? Chalo. Next is what? We'll discuss equivalent mass. Before equivalent mass, we'll discuss what? Molar mass. One is what? Molar mass. Another is what? Molar mass. What do you mean by molar mass? Molar mass means 1 mole of a substance. Molar mass is the what? Molar mass is the 1 mole of a substance. 1 mole of the substance is called what? Molar mass. Clear? In molar mass, how can you calculate molar mass?
Clear? Molar mass means what? Now n, small n is equals to what? Small m divided by capital M. Small m is what? Number of moles, and small m is what? Given mass. Capital M is what? Molar mass. So how can you calculate the number of moles? Number of moles we can calculate small n equals to what? Small m divided by capital M. Small m is the what? Given mass divided by what? Molar mass. So molar mass means what? Molar mass is the 1 mole of the substance. 1 mole of the substance को कौन कहा जाए? Molar mass कहा जाए. बुझिएला? Next is what? We'll discuss what? 13 by equivalent mass. Or how can you calculate equivalent mass? Equivalent mass means what? How can you calculate equivalent mass? Equivalent mass, we can calculate the equivalent mass. Equivalent mass equals to what? The molar mass divided by its valency. Molar mass divided by its what? Valency. Valency means what? 13 by valency. 13 by valency. Valency means the combining capacity. The combining capacity of an element is called its valency. Clear? So valency means what? The combining capacity of an element is called its what? Valency. In this case, how can you calculate the equivalent mass? Equivalent mass means what? The molar mass divided its valency. Consider we take then element sodium. Sodium, the atomic number is what? 11. Atomic mass is what? 23. So 23 divided by what? 1. The valency of sodium is what? 1. That means 23. 23 by 1 is what? 23. 23 is the equivalent mass of what? Sodium. Clear? Consider oxygen. Atomic number is what? 8. Atomic mass is what? 16. So how can you calculate the equivalent mass of oxygen? Equivalent mass of oxygen means what? Equivalent mass of oxygen means what? The molecular mass of the what? Or molar mass of oxygen is how much? 16 divided by valency of oxygen is what? 2. Then we get what? 8. 8 is the what? 8 is the equivalent mass of oxygen. Clear? Clear समझते? Clear? Question एमती जहाँ भी पचारिबो question पचार दबो calculate the equivalent mass of nitrogen, calculate the equivalent mass of sulfur, anything, any question you can put the value what? Equivalent mass is equal to molar mass divided its valency, then you get what? Equivalent mass. Clear? Okay, Satya Prakash, clear? Okay. Namaskar Satya Prakash. Chalo. Next we'll discuss what? Mole concept. Very important topic. Today we'll discuss mole concept. Mole concept is most important topic. Mole concept means what? 13 by mole concept. Mole concept is known as the method to use the amount of the substance. It is a unit. It is a what? Unit. To measure the amount of the substance. But substance ro amount को measurement करिया पाई जो unit टा use करे जाए ता कौन को आजे ने mole concept को आजे. बुझिएला? In mole concept, 1 mole is how much? 6.022 into 10 to the power 23 particle. 23 particle. In 23 particle, the particle may be atoms, the particle may be ions, the particle may be molecules. बुझिएला? एडी कौन कहूची 1 mole substance ର value केते ना 6.022 into 10 to the power 23. से 23 कौन पार्टिकल से पार्टिकल कौन कौन सैटिस्फाइड करि पारे? इट्स मे बी एटम्स हे पारे, इट्स मे बी आयन्स हे पारे, इट्स मे बी कौन मॉलिक्यूल्स हे पारे. बुझिएला? क्लियर? मोल कांसेप्ट आउ कौन कहूची ना ये मोल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस containing the same number of different entities such as atoms, ions and molecules. Clear समझते? बुझिएला? चलो नेक्स्ट इज व्हाट विल डिस्कस how can we calculate number of moles, how can you calculate number of molecules, how can you calculate mass in grams. These are the most important topic. Okay, so how can you calculate number of moles? Number of moles, that means this is the word, the mass in gram. This is given is what? Mass in gram. This is the number of moles, this is the number of molecules. How can you calculate mass in grams to number of molecules? Now divided by molecular mass. Mass in grams
divided by what? Molecular mass. Molecular mass. Then we get what? Number of moles. बुझेला समस्त क्लियर. तो मास इन ग्राम टू आम नंबर ऑफ मोल्स केमिति पाइबा गिवन मास बा मास इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर मास देन वी गेट व्हाट नंबर ऑफ मोल्स. क्लियर. ओके. नेक्स्ट जदि आम नंबर ऑफ मोल्स दिया हिथिबो नंबर ऑफ मोल्स रु केमिति आम मास इन ग्राम्स पाइबा ना मल्टीप्लाइड बाय मॉलिक्यूलर मास. नंबर ऑफ मोल्स रे कोन करिबा ना काहा को मल्टीप्लाई करिबा मॉलिक्यूलर मास को. काहा को मल्टीप्लाई करिबा मॉलिक्यूलर मास को. जदि मॉलिक्यूलर मास को आम मल्टीप्लाई करिबा ताले आम कौन पाइबा ना मास इन ग्राम. बुझीगला. सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स रु आम केमती पाइबा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. नंबर ऑफ मोल्स रु नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स केमती कहबा ना मल्टीप्लाई बाय व्हाट मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास को जब मल्टीप्लाई करबा कहा सहित नंबर ऑफ मोल्स सहित देला आम कौन पाइबा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. सिमिलरली जदि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रु नंबर ऑफ मोल्स पाइबा केमती करबा ना नंबर ऑफ मोल्स रे कौन डिवाइड करबा मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड करले कौन पाइबा नंबर ऑफ मोल्स. बुझीगला. सिमिलरली in case of mass in grams to number of moles. Mass in grams to number of moles केमती पाइबा ना multiplied by molecular mass. Again from number of moles to mass in grams how can you calculate ना divided by molecular mass. बुझिएला. So these are the methods we can calculate the mass in grams, number of moles and number of molecules. बुझिएला समझते clear. So mass in grams to number of moles to number of molecules to mass in grams. Mass in grams is multiplied by molecular mass, then you get number of molecules. Next number of molecules to mass in grams divided by molecular mass. Mass in grams to number of moles what divided by molecular mass. Number of moles to mass in grams multiplied by molecular mass. These are the different method to calculate the what mole concept. Okay. Next we'll discuss what formula of the calculate of moles. Formula using the calculates of moles. Okay Satya, very good. So how can you calculate the formula to calculate the number of moles. एटी दिया है number of moles of atoms एमती काढ़िबा ना weight in gram divided by gram atomic mass. ताकू आमे और भी लिखि परिबा given mass divided by atomic mass. Okay, divided by atomic mass, then you can calculate the what mole of atoms. बुझिएला. Similarly जदि mole of molecules काढ़िया पई कहबा ताले mole of molecules हमें केमती काढ़िबा ना how can you calculate the mole of molecules. Mole of molecule means what given mass. Similarly given mass divided by what molecular mass per, or we can write weight divided by gram molecular weight. बुझिएला तो clear. So in case of mole of atoms, how can you calculate the mole of atoms? Moles of atoms means what? The atomicity into mole molecules. Atomicity into mole molecules. What do you mean by atomicity? Or can say what do you mean by atomicity? Atomicity means what? Atomicity means the number of atoms present in a molecule. गोटे मॉलिक्यूल रे केते नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट अछि ताकू कहा जाय तार कोन एटॉमिसिटी. जेमति कि मु एग्जांपल नै जिबी एग्जांपल कोन नै जिबी H2 रो एटॉमिसिटी केते 2. सिमिलरली मु नै जिबी P4 एटॉमिसिटी केते 4. मु नै जिबी S8 सल्फर S8 एटॉमिसिटी केते 8. ओजोन O3 एटॉमिसिटी केते 3. बुझियला तो. जदि मु सिमिलरली मु नै जिबी वाटर एटॉमिसिटी केते 3. जदि मु नै जिबी सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड रो एटॉमिसिटी केते 7. So these are the number of atoms present in a molecules. These are called what? Atomicity. So how can you calculate the moles of atoms? Moles of atoms means what? Atomicity into moles of molecules. Clear? Next, moles of gases. How can you calculate the moles of gases? Moles of gases means how can you calculate moles of gases? Moles of gases how can you calculate? Volume of the gases in liters at STP and NTP divided by what? 22.4 liter. मन रख सब बड़े वॉल्यूम ऑफ द गैसेस एट STP and NTP is always 22.4 liter. बुझेला वॉल्यूम ऑफ द gases at
STP and NTP is always 22.4 liter. मन रहला NTP is what? Normal temperature and pressure. STP is what? Standard temperature and pressure. Both standard temperature and pressure and normal temperature and pressure volume of the gases कहते हैं 22.4 liter. Clear समझते? Next is what? Moles in particles. How can you calculate moles in particles? Na number of moles divided by Avogadro's number. Number of moles, mole in particles. How can you calculate? N divided by Avogadro's number. N is the what? Number of the particles divided by Avogadro number. Avogadro's number. What? बुझेला? Clear समझते? Next is what? The moles of atoms. How can you calculate the moles of atoms? Moles of atoms means what? The number of atoms divided by Avogadro's number. The moles of particles कहले कौन? Number of particles divided by Avogadro's number. बुझेला? Clear समझते? Clear तो? ताले सत्यप्रकाश मते को how can you calculate atomicity? के कहबो? How can you calculate atomicity? Atomicity हमें केमती काढिबा? How can you calculate atomicity? Atomicity means sum of all the atoms present in a molecule. Atoms. Clear? All of you clear this concept? These are the most important. Okay. Next, using this formula, we solve all the mole concept questions. Okay. Chalo. Next is what? Questions. How many of hydrogens are there in 36 gram of ammonium? Ammonium the charge is what? NH4 plus. If the NH3 ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେଟା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? Ammonia. This is called what? Ammonia. And NH4 plus is what? This is called ammonium. Called what? Ammonium. So in this case, question is how many atoms of hydrogens are there in 36 gram of NH4 plus ions, ammonium ion? How can you calculate? Now molar mass of ammonia is what? 18 gram. Molar mass of ammonia is what? 18 gram. And number of moles of ammonium, NH4 plus, number of moles of ammonium is how much? The molar mass is what? Ammonium पाइगला कहते 18 gram. Given mass कहते होची 36 gram. That means given mass divided by what? Divided by? Yes. Divided by कौन था? Molecular mass. ताले एटी molecular mass कहते होची 80 gram. 18 gram. ताले 36 gram divided by 18 gram. Then you get what? 4 moles. So 4 moles. So the number of moles of ammonium is how much? 4 moles. So total number of moles of hydrogen atoms केमती काढिबा? Total number of moles of hydrogen atoms means what? 16 moles. केमती पाइबा 16 moles? कहना हमें पाइले number of moles of ammonia. Number of moles of ammonia is how much? 4 moles. बुझिएला? Number of moles of ammonia जदि 4 moles ताले ammonium NH4 plus रे केतरा हाइड्रोजन अछि? 4टा हाइड्रोजन ताले 4 into 4. That means we get what? 16. 16 is the what? Total number of moles of hydrogen atoms in ammonium plus. Clear? So how can you calculate how many atoms of hydrogen are there in 36 gram of ammonium plus? Now 16 number of moles into what? Avogadro's number 6.022 into 10 to the power 23. Then you get what? 96.352 into 10 to the power 23. Clear समझते? Clear? Okay, very good. Next is what? Next question number 2 is what? Calculate the number of electrons present in 3.2 gram of what? Methane. Calculate the number of electrons present in 3.2 gram of methane. Methane रे केते number of electrons present अछि calculate कर. आमे आगो काढिबा कोन ना methane रो molecular mass. Methane रो molecular mass केते 16. बुझिला तो? And moles of methane केते अछि? केते moles of methane given अछि? ना 3.2 gram of methane. ताल ताकू convert करिबा केते? 3.2 gram of methane को convert करिबा कोथरे number of moles रे ताल केते आसीबो सेटे 0.2. The number of electron 1 mole of molecule केते अछि? Methane. Number of molecule 1 mole of molecule केते अछि? Methane. Methane रे carbon केतरा अछि एठी?
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन केमती काढिबा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन केमती कढा जाए 36 yes yes Satyaprakash right very good yes this one is the we can calculate this one what you can calculate 36 divided by 8 then we get what 2 moles this is not 4 moles this is what 2 moles 2 moles clear so now total number of moles of it hydrogen is how much so 4 into sorry 2 into 4 then we get what 8 moles बुझेला तो 8 moles then we multiplied 8 into how much 6.022 into 10 to the power 20 then we get what how much the value will be Satyaprakash what is the value of 6.022 into 8 into 10 to the power 23 कौन हो yes कौन हो हाय सर जीके हाय सर $48.176 10 to the power बुझेला तो this is the answer of this question clear clear समझते ये केमिस्ट very good सत्यप्रकाश very good जीके तुम केमिस्ट्री रे तुम एलटीआर मेन्स एग्जाम रे टोटल 40 टा क्वेश्चंस आसीबो ओके 40 टा क्वेश्चंस रु टारगेट रखो 30 टू 35 टा चलो तो बुझीला तो आम ताले केमती पाइबा क्वेश्चंस से आम क्वेश्चंस ये एग्जाम रे रेज हो बुझेला तो से पचार दबो कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 3.2 ग्राम ऑफ मिथेन केमती काढिबा ताले सर आपण रेगुलर करंतु निश्चित 30 प्लस आसीबो आसीबो रेगुलर एबे रेगुलर क्लासेस ही तमर यूट्यूब रे चलीबो ओके एवरी डे तमर एबे क्लासेस रहइबो नॉट ओनली केमिस्ट्री अदर क्लासेस भी रहइबो तुम रेगुलर टिके वीडियोस गुड़ा को देखो एलटीआर एथर निश्चित ओके क्वेश्चन इज कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 3.2 ग्राम ऑफ मिथेन 3.2 ग्राम ऑफ मिथेन रे आमे काढिबा कोन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स केतरा प्रेजेंट अछि आमे जानिथिले z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर एटॉमिक नंबर इज व्हाट दिस इज द एटॉमिक नंबर z इज द व्हाट प्रोटॉन इज द व्हाट प्रोटॉन इज द व्हाट इलेक्ट्रॉन से पचारिची कौन ना कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 3.2 ग्राम 3.2 ग्राम रे केतरा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट अछि केमती काढिबा ना मॉलिक्यूलर मास ऑफ मिथेन इज व्हाट 16 कार्बन रे केते एटॉमिक नंबर केते 12 एटॉमिक मास केते कार्बन रे 12 प्लस हाइड्रोजन केतरा अछि 4 टा ताले केते 12 प्लस 14 केते 6 बुझेला तो क्लियर से कहछि मोल्स ऑफ मिथेन्स केते मोल्स ऑफ मिथेन्स गिवन अछि 3.2 ग्राम बुझेला ताले 3.2 मोल ऑफ केते होबो ताले ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 1 मोल ऑफ मिथेन इज हाउ मच 6 plus 4 इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हाई स्कूल वेट क्वेश्चन कहछि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल ऑफ मिथेन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन केतरा अछि कार्बन केतरा अछि 6 टा
कार्बन टोटल इलेक्ट्रॉन केते 6, हाइड्रोजन टोटल इलेक्ट्रॉन केते 4, ताले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मीथेन इज हाउ मच 10 इलेक्ट्रॉन्स. So total number of electrons is how much? 0.2 into 6.022 into 10 to the power 23 into 10. Then we get what? At 12.044 into the answer. Clear? Clear समझते? चलो next. Next question is, if the components of the air are nitrogen 78%. कौन पारिबी से डेफिनेटली हम तो गुड नेम टा कौन कह जीके कहले मु जीके क्या को डाकी इफ क्वेश्चन कही इफ द कंपोनेंट्स ऑफ द एयर आर नाइट्रोजन 78%, नाइट्रोजन देछि 78%, ऑक्सीजन केते 21%, आर्गन केते 0.9%, बुझियला, एंड कार्बन डाइऑक्साइड केते देछि 0.1%. बाय कोथरे अछि ना वॉल्यूम. व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर? मॉलिक्यूलर मास ऑफ एयर पचारछि, बुझियला तो ताले हम केमती काढिबा the molar ratios are volume of the ratios in gases. This is called Avogadro's principle. Avogadro's principle कौन थिला ना volume of the gases is directly proportional to number of moles of the gases at constant temperature and what pressure. This is the word Avogadro's law. बुझियला. Avogadro's law is what? Volume is directly proportional to number of moles of the gases at constant temperature and pressure. बुझियला. सेठी कहिछि Avogadro's molecular mass of air रो molecular mass of एठी दे दिछि केते नाइट्रोजन केते 78%, नाइट्रोजन रो molecular mass केते 78 into 28 plus oxygen केते हो 21 plus 32 and next given is what argon केते 0.9% into केते 40 plus एडी गिवन अछि केते कार्बन डाइऑक्साइड केते 0.1%, ताले 0.1% कार्बन रो मोलिकुलर मास केते 44, ताले हम पाइले केते 78 into 23 28 सॉरी एड केते पहला में 78 टू केते 28 plus 21 into केते 32 plus 0. केते गिवन अछि 9 to 40 plus 0.1 44. बुझल तो divided by there what sum of the masses 71 plus 0.9 plus what, then we get what 28.94. This 28.964 is the what molecular mass. Here बुझेला तो क्लियर समझते. चलो नेक्स्ट इज व्हाट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. there are types of chemical reaction. First chemical reaction is what? The synthesis or combination reaction. Synthesis or combination reaction. What in by synthesis or combination reaction? How can say what in by synthesis or combination? How can say what in by combination reaction? Proof. Chemistry question. These are the questions तुम्हें जानो को टाइप रो क्वेश्चंस आसुची. अच्छा रूप एटा को कोन हो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. व्हाट इज द सिंथेसिस और कॉम्बिनेशन रिएक्शन. व्हाट इन बाय सिंथेसिस और कॉम्बिनेशन रिएक्शन. What in by synthesis or combination reaction? Combination reaction means what? When two simpler substances are combined, then it forms a single product. When two simpler substances are combined, then it forms a single product. जदि दुईटा simpler substance combine है कि गोटे single product दोउची ताले ता कोन कहै जिवो combination reaction वा synthesis. बुझियला. The reactions in which two or more reactants are combined, then it forms a what? Single product. This is called combination reaction, or we can say this is called what? Synthesis reaction. बुझियला. For example, carbon react with oxygen, then it forms what? Carbon dioxide. Similarly, we can react with magnesium, react with oxygen, then it gives what? Magnesium. That means the two simpler substances in reactant side is what? Carbon and oxygen. Another is what? Magnesium and oxygen.
When carbon react with oxygen, then it forms what? Carbon dioxide. Magnesium react with oxygen, then it forms what? Magnesium oxide. Similarly, we take calcium oxide react with water, then it gives what? Calcium hydroxide. Then it gives what? Calcium hydroxide with the releasing of the what? Heat. With the releasing of heat. In this calcium oxide, this is called what? Quicklime. ताको आउ कौन कहा जाए? Quicklime. ताको आउ कौन कहती? Quicklime. Calcium hydroxide को कौन कहती? Slag lime. कौन कहती? Slag lime. जदि आम दुईटा सिंपल सब्सटेंस को नवा calcium oxide और water को देले से कौन दबा? Calcium hydroxide. ताले ताको कौन कहा जाए? Combination reaction. When two simpler substance combine, then it forms a single product. Clear समझते? चलो. Next question is what? Next is what? Na decomposition or analysis reaction. What in by decomposition or analysis reaction? Decomposition reaction and what in by analysis reaction? How can say? The reaction in which one compound decomposes to form what? Two or more simpler substances. जदि गुटे कंपाउंड को आम डिकम्पोज करिकी टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस पाइबा ताले ता कोन को जीवो ना डिकम्पोजिशन रिएक्शन बुझियला. कंसीडर वी टेक calcium carbonate. Calcium carbonate on heating, then it gives what? Calcium oxide plus what? Carbon dioxide. बुझियला था. This is called decomposition reaction. Decomposition reaction, that means when one simpler substance decomposes, then it forms two or more simpler substance. बुझियला. यदि गोटे सब्सटेंस को आम इन प्रेजेंस ऑफ हीट देले जे टू और मोर सब्सटेंस बाहरुची ताले ता कहजिबो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बा एनालिसिस रिएक्शन बुझियला. कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कले ताले कोन बाहला? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. कैल्शियम कार्बोनेट को कोन कहंती? लाइमस्टोन. ता कोन कह जाय? लाइमस्टोन. आ कैल्शियम ऑक्साइड को कोन कहंती? ताको क्विक लाइम. कोन कहंती? क्विक लाइम. बुझियला. क्लियर. जदि एटी क्वेश्चंस जदि मु कैल्शियम ऑक्साइड सहित जदि वाटर देबी ताले कौन प्रोडक्ट हो? किए कहबो? जदि कैल्शियम ऑक्साइड को जदि मु वाटर देबी ताले कौन प्रोडक्ट हो? किए कहबो? ओके से व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. वेरी गुड सत्य प्रकाश. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विथ द रिलीजिंग ऑफ हीट. That means if the heat is released, this is called what? Exothermic reaction. Exothermic reaction. Exothermic reaction means the chemical reaction in which heat energy is released. In a chemical reaction, in this case, heat energy is absorbed. That means this is called what? Endothermic reaction. Endothermic reaction. बुझेला? Clear? अच्छा अच्छा सत्य प्रकाश मत कह जदि एठी मु कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट ताको जदि मु कार्बन डाइऑक्साइड पास करेबी ओके इन aqueous medium, what will be the product form? सुस्मिता सेठी नमस्कार. नमस्कार. कौन बड़ा किए कह? कैल्शियम कार्बोनेट जदि मु कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन पासेस एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर, देन व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म? हु कैन से? कैल्शियम कार्बोनेट रो कलर कौन? मिल्की. कौन? मिल्की कलर. कैल्शियम कार्बोनेट रो कलर होची मिल्की. व्हेन इट पासेस तो जानी दिंतु. ओके ओके. कैल्शियम कार्बोनेट रो कलर होची मिल्की कलर. ताकू जदि मु एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास करिवि इन एक्वस मीडियम रे से देब कोन ना कैल्शियम बाइकार्बोनेट CaHCO3 दिस इज कॉल्ड कैल्शियम बाइकार्बोनेट. बुझियला? एडी कोन होबो? कैल्शियम बाइकार जदि एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड मु मिल्की कलर रे देबी इन एक्वस मीडियम रे ताले सेटा कोन होबो? कलर डिसअपियर हे जिवो. कलर डिसअपियर पता कौन कहती? कलरलेस फॉर्मेशन. बुझीगला? क्लियर? क्लियर समझते? चलो तापर एटी आमे जानिबा डिकम्पोजिशन रिएक्शन बा एनालिसिस रिएक्शन रे आमे पढिले सेतरे तार टाइप्स ऑफ रिएक्शन कोन आछी ना थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और दिस इज कॉल्ड फोटोलिसिस. फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन और दिस इज कॉल्ड व्हाट? फोटोलिसिस. बुझीगला? फर्स्ट जानिबा कोन
na thermal decomposition reaction. Thermal decomposition reaction means what? What in by thermal decomposition reaction? How can say what in by thermal decomposition? Thermal decomposition reaction means in presence of heat. The chemical reaction which takes place in presence of heat. That means in this case we take lead nitrate, PbNO3 equal to lead nitrate on heating, then it gives what? Lead oxide plus nitrogen dioxide plus what? Oxygen. That means the chemical reaction which takes place on heating, this is called what? Decomposition reaction, and the decomposition reaction is called what? Thermal decomposition. बुझेला तो next is what? Electrolytic decomposition reaction. Electrolytic decomposition reaction means the chemical reaction which takes place in presence of electric current. The chemical reaction takes place in presence of electric current. When electrolytic decomposition in water, in presence of electric current, then it forms what? Hydrogen gas plus what? Oxygen. That means in aqueous medium, the water in presence of electric current, then it forms what? Hydrogen gas. That means this reaction is called electrolytic decomposition reaction. बुझिएला इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन आउ कौन कहा जाए ना इलेक्ट्रोलिसिस भी कहा जाए. कौन कहा जाए? इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस भी कहा. बुझेला तो क्लियर. PbNO3 होल टू ताको कोनती लीड नाइट्रेट. कौन कोनती? लीड नाइट्रेट या को कोनती लीड ऑक्साइड. बुझेला शुभस्मित सेठी. क्लियर तो क्लियर. चलो नेक्स्ट इज व्हाट? फोटोलिसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन. फोटोलिसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये कहबो व्हाट इन बाय फोटोलिसिस. Photolysis or photodecomposition reaction means the chemical reaction which takes place in presence of sunlight. यदि sunlight presence रे takes place होची ताहले ताको कोन कहजिवो photolysis or photodecomposition. For example we take silver chloride AgCl को जदि मु कोन करिवि ना sunlight देबी ताहले कोन दबो silver chlorine gas. बुझेला तो क्लियर. जदि सिल्वर क्लोराइड को AgCl को मु कौन देवी जदि मु कौन देवी सनलाइट देवी ताले कौन दबो सिल्वर और क्लोरीन गैस. एजी जो कलर फॉर्मेशन हो सिल्वर ता कलर कौन? ग्रे. बुझेला तो क्लियर. तो फोटोलिसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन मीन्स द रिएक्शन व्हिच टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. दिस इज कॉल्ड फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन और दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड एज फोटोलिसिस. Similarly, we take another reaction silver bromide AgBr. Silver bromide को जदि मु सनलाइट देवी ताले से कोन दबो Ag plus Br2. बुझियला तो Ag plus Br2. सिल्वर रो कलर कोन? ग्रे. ब्रोमीन रो कलर कोन? ब्राउन. कलर कोन? ब्राउन. क्लियर समझते? ओके. नेक्स्ट इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. नेक्स्ट रिएक्शन इज व्हाट? Displacement reaction. What in by displacement reaction? Displacement reaction means the chemical reaction which takes place when highly reactive metal can displace the low reactive metal. The chemical reaction takes place when highly reactive metal can displace the low reactive metal. Then this reaction is called what? Displacement reaction, or simply we can say simple displacement reaction or single displacement reaction. बुझिएला. Consider we take example. Zinc react with copper sulfate. Then the product will be what? Zinc sulfate, copper. In this case zinc is more reactive. This is what? More reactive element, and copper is what? Less reactive. That's why zinc displace from copper sulfate solution what? Copper. बुझेला. That means this is called what? Displacement reaction. Clear.
displacement reaction means highly reactive metal can displace the low reactive metal बुझेला. तो similarly मु example नेबी कोन magnesium react with copper sulfate तले कोन दबो MgSO4 प्लस कोन दबो copper तले एटी magnesium कोन होबो more reactive, copper is what less reactive बुझेला. According to the reactivity series, which one is the most reactive? Potassium is the most reactive and platinum is the what least reactive मन रखी. Potassium पर second most किए sodium मन रख लिया clear and platinum second least किए gold AU this is the second least clear. In reactivity series potassium is the most reactive, sodium is the what second most reactive and least reactive is what platinum, second most gold. Clear समझते displacement reaction. चलो next is what double displacement reaction. Double displacement reaction means the reaction takes place when the compounds exchange their ions. जदि दुईटा compounds दिया हेतिबो तांको भितरे जदि ion exchange होउथिबो ताहले से जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टा हबो से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कोन कहै छै ना डबल डिस्प्लेसमेंट बुझियला. consider we take AB plus is what CD. Okay, consider A is positive, B is negative, then it forms what AD plus is what BC. That means in this compound AB, the compound CD, they exchange their ions, then they attract each other, then it forms the new substances. That means this is called double displacement. Double displacement means what the reactions which can exchange their ions between the what two reactants forming a what new compound. This reaction is called double displacement reaction. बुझियला समझते आम एग्जांपल नबा एग्जांपल गोटे दबा एग्जांपल आम लिखिबा कोन consider sodium hydroxide NaOH react with hydrochloric acid. The charge of the sodium is Na plus, hydroxide is what OH minus, hydrogen H plus, chlorine Cl minus. That means this Na plus is attracted to what Cl minus, then it forms what NaCl. In this case OH minus attack to H plus, then it forms what H2O. That means these two compounds they exchange their ions, then they form the what new substances or new products or new compounds. Then this reaction is called double displacement reaction. Clear समझते double displacement. Next is what precipitation reaction. Precipitation reaction means what the chemical reaction which takes place when some of the residue or some of the precipitate which is settled down as the bottom of the beaker. जदि गोटे chemical reaction आमे करिवु किछि residue बा किछि precipitate अछि कि गोटे beaker रे bottom रे settle down हेइ जिवो बा किछि residue left हबो ताले से reaction टा कोन कहजो precipitate. Precipitate means some of the insoluble substance is formed which is settled down as the bottom of the beaker. बुझियला. For example आमे नै जिवा कोन lead nitrate PbNO3 2. lead nitrate को आमे कोन दबा potassium iodide. कोन दबा potassium iodide देले से कोन दबो PbI2 plus what potassium nitrate. बुझियला. Consider एटा होची beaker. ए beaker रे आमे कोन करिवु ना lead nitrate रो solution अछि एथरे lead nitrate रो solution PbNO3 2. सेथरे आमे कोन करलु ना few drops of कोन पकेलु ना potassium iodide KI solution. The KI solution. That means some of the residue is left or which is settled down as the bottom of the beaker. This is called what potassium iodide, sorry lead iodide PbI2. This lead iodide which is act as a precipitate. That means this reaction is called precipitation. Clear? Subhasmita Sethi. Clear? Precipitation reaction means the chemical reactions in which some of the residue or some of the precipitate or some of the insoluble substance is formed which is settled down as the bottom of the beaker. That means this is called precipitation. In this case precipitation is what lead iodide. PbI2 is the what precipitate. Clear? PbI2 color kono yellow color kono yellow color. lead nitrate ro color kono white color. White color. बुझियला. Clear? Okay, thank you. चलो next.
Next is what? Neutralization reaction. Neutralization reaction means what? The chemical reaction in which when acid react with base. যদি acid base সହିତ react করিব তাহলে সে কোন formation করিব? Salt ଆଉ water. The salt ଆଉ water formation করিব. Salt formation হবো মানে জানিব যে সেটা neutralization reaction. তাহলে consider we take sodium hydroxide react with what? Hydrochloric acid. তাহলে সে কোন দেব? NaCl plus what? H2O. NaCl plus H2. NaCl, this is called what? Common salt. Called what? Common salt. That means in a chemical reaction when base react with acid, then it forms what? Salt with what? Water. This is called neutralization. Clear? बुझेला. Similarly आउ गोटे एग्जांपल आमे नबा कोन? पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH react with hydrochloric acid. The product will be what? KCl plus H2. KCl is the what? Potassium chloride. Potassium chloride. बुझेला. This potassium chloride is act as a what? Salt. That means in a chemical reaction, potassium hydroxide is what? Base. Hydrochloric acid is what? Acid. When base react with acid, then it forms what? Salt and water. That means this reaction is called what? Neutralization reaction. Clear समझते? Clear? चलो. Next is what? Stoichiometry. Stoichiometry is the most important thing to calculate the what? Mole concept, all the unity of the measurement of the mole concept, and to balance the chemical equation. Chemical equation को balance करिया पाई जो मेथड यूज करा जाता कौन? स्टोइकियोमेट्री. आउ को मेथड रे हम ताको बैलेंस करू ना? हीट एंड ट्रायल मेथड. को मेथड रे? ना हीट एंड ट्रायल मेथड. हीट एंड ट्रायल मेथड रे हम कोन करू ना? केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करू. केमदी? In a chemical reaction, consider reactant to product. This is the word reactant. This is the word product. Before in this reactant, this we take LHS side. These are the word RHS side. हमें कौन करूँ? टोटल नंबर ऑफ केते मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट अछि बा केते एटम्स प्रेजेंट अछि रिएक्टेंट साइड रे, टोटल नंबर ऑफ केते प्रोडक्ट रे प्रेजेंट अछि, टोटल नंबर ऑफ एटम्स और एलिमेंट्स ताको बैलेंस करू कोथरे ना? हीट एंड ट्रायल मेथड रे. कोथरे ना? एलएचएस और आरएचएस साइड नहीं की. बुझेला तो ताको को लॉ कहा जाए ना? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. कौन कहा जाए? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मींस व्हाट? व्हाट इन बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? लॉ ऑफ कंजर्वेशन. Law of conservation of, what in by law of conservation of mass? Law of conservation of mass means in a chemical reaction, mass of the reactant side, mass of the reactant side equals to mass of the product side. Mass of the product side. बुझेला? क्लियर समझते? For example, आमे नबा consider we take example calcium carbonate. Okay, एटी हम कौन करी? calcium carbonate. ये CO एटी visible होबो. Okay, we take calcium carbonate. calcium carbonate को हमें हीट करिबा तले से कौन दबो ना? calcium oxide plus carbon. बुझेला तो? कैल्शियम कार्बोनेट रो मॉलिक्यूलर मास केते? कैल्शियम ऑक्साइड रो केते? कार्बन डाइऑक्साइड रो केते? बुझेला तो? एटी कैल्शियम कार्बोनेट रो टोटल मास केते अछि ना? 100 ग्राम. कैल्शियम कार्बोनेट रो केते? 56. कार्बन डाइऑक्साइड रो केते? 44. मु कहितली कोन? According to law of conservation of mass, that means in a chemical reaction, mass of the reactant side equals to mass of the product side. Before the chemical reaction, the substance are called reactant. After the chemical reaction, these are called what? Product. Thallium calcium carbonate kono? This is the reactant. After the chemical reaction, then it forms calcium oxide and carbon dioxide. These are the what? Product. That means mass of calcium oxide and carbon dioxide total is what? 100 gram. That means mass of the reactant is 100 gram. So mass of the reactant side equals to mass of the product side. That means this is called what? Law of conservation of mass. Yes, yes. मु कहूची हीट एंड ट्रायल रे केमती करा जाय मु देखौची. हला हीट एंड ट्रायल रे हम केमती बैलेंस करिबा? हीट एंड ट्रायल रे केमती बैलेंस करिबा? कंसीडर वी टेक व्हाट? H2O.
H2O को जदि आम हिट करवा से कौन दब H2O को जदि हिट करवा H2O को आम हिट करवा से कौन दब H2 प्लस कौन O2 बुझीगला तो H2 प्लस O2 ये हाइड्रोजन केतरा अच्छी LHS साइड रे हाइड्रोजन केतरा अच्छी दुईटा ऑक्सीजन केतरा अच्छी गोटे ये RHS रे हाइड्रोजन केतरा अच्छी दुईटा ऑक्सीजन केतरा अच्छी दुईटा so we have to multiply the stoichiometric coefficient in the reactant side of oxygen 2 that means in this case oxygen equals to 2 in this case oxygen equals to 2 in this case hydrogen equals to 2 in this case hydrogen equals to 2 बुझीगला ताले एटी कोन हबो एटी जदि मु मल्टीप्लाई करिवि केते 2 ताले एटा कोन हिजबो 2H2O ताले एटी हाइड्रोजन केते हेगला 4 ताले एटी प्रोडक्ट रे भी हाइड्रोजन 4 दरकार इनटू 2 देन हाइड्रोजन इक्वल्स टू 4 ऑक्सीजन इज 2 according to the heat and trial method we can balance the chemical बुझीगला शुभस्मिता सेठी क्लियर law of conservation of mass clear okay चलो next is what stoichiometry next is what stoichiometry what in by stoichiometry कौन पे यूज करा जाए stoichiometry कौन and the calculation of the products and reactants in a chemical reaction is known as stoichiometry the chemical reaction रे तारे reactants और products को calculation करिया पे जो method यूज करा जाए ता कौन कहते stoichiometry एटा कौन पाई necessity it is necessity understanding use of the word mole ideas as well as the balancing of the chemical equation mole ideas आउ chemical equation को balance करिया पे जो यूज करा जाए ता कौन stoichiometry कहछे बुझियला मु stoichiometry को define करबी next स्लाइड रे हम ताको डिफाइन करिवे stoichiometry बुझियला तो नेक्स्ट इज व्हाट stoichiometry फास्ट रो रिलेशन कोन ना मोल टू मोल कैलकुलेशन बा मोल टू मोल रिलेशनशिप सेकंड इज व्हाट मास वॉल्यूम रिलेशनशिप थर्ड इज व्हाट मास मास रिलेशनशिप फोर्थ इज व्हाट वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एवरीबॉडी शुड क्लियर ओके so stoichiometric calculation first calculation will discuss mole to mole relation second is mass volume relationship third is what mass mass relationship fourth is what volume volume relation बुझेला तो क्लियर फास्ट देखियो हमें कोन ना mole to mole relationship रे फर्स्ट क्वेश्चन इज calculate the mole of carbon dioxide obtained when 0.274 mole of ethanol is bond ethanol formula is what C2H5OH ethanol को जदि मु बर्निंग करी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ताले से कौन प्रोडक्ट दबो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस व्हाट वाटर बुझियला क्लियर से कहूची केते ना 1 मोल ऑफ इथानॉल रिएक्ट्स टू फॉर्म 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड केते मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन होची अकॉर्डिंग टू द बैलेंसिंग ताले 1 मोल ऑफ इथानॉल एटी केते 1 मोल ऑफ इथानॉल व्हेन रिएक्ट देन इट फॉर्म्स व्हाट 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बुझेला तो ताले आमे जानिचे नंबर ऑफ मोल्स केमती कढा जीवो गिवन मास डिवाइडेड बाय व्हाट्स मॉलिक्यूलर मास गिवन मास एटी नंबर ऑफ मोल्स केते अछि कहारो अछि इथानॉल रो केते दिया अछि 0.274 दैट मींस 0.274 इनटू कार्बन डाइऑक्साइड केते मोल अछि 2 मोल डिवाइडेड बाय केते मोल ऑफ इथानॉल ना 1 मोल ऑफ इथानॉल देन यू गेट व्हाट 0.548 मोल ऑफ व्हाट कार्बन डाइऑक्साइड बुझियला समस्त काहा को बुझियला नि पचारो पंकज मंडल नमस्कार एक्चुअली पेड बैच रे क्लासेस रे क्ला होचंती पेड बैच क्लासेस चाली छेबे तो मैंने जानी नांती तुम जदि सांग मैंने भी अच्छे तांको शेयर करो से मैंने लिंक भी जानिया दरकार क्लासेस रेगुलर क्लासेस एबे चालूची एलटीआर मेंस को एबे हमर पूरा टारगेट समस्ते केमिस्ट्री जमती हमें 30 to 35 क्वेश्चन पंकज बाबू बुझीला तो ओके पंकज बाबू नुह पंकज सार हे जिवे आपण कहना आपण एथर एलटीआर मेंस टा आपण को हाथ रे पंकज सार ओके ओके ठीक अच्छे अगेन रिपीट करुच्ची से कहूँ कौन क्वेश्चन पचारुची calculate the moles of carbon dioxide obtained when 0.274 mole of ethanol is bond केते mole of carbon dioxide is obtained now calculate the moles of carbon dioxide obtained when 0.27 mole of ethanol is bond केते mole of ethanol C2H5
OH इथानॉल केते मोल होची ना 0.274 मोल ऑफ इथानॉल बॉर्न होची बुझिला इथानॉल टा बॉर्न कहा सहित हबो ना ऑक्सीजन सहित हबो जदि मु ऑक्सीजन सहित बॉर्न करिवि ताले से कोन फॉर्मेशन करिवो कार्बन डाइऑक्साइड पे साउंड आसुची समस्ते साउंड भी आसुची कि यस करो साउंड आसुची कि नहीं साउंड आसुची सत्यप्रकाश ओके ओके थैंक यू क्लियर समस्ते सुस्मिता सेठी क्लियर आगो को जीवा क्लियर तो ये कही 1 मोल ऑफ देछि केते इथानॉल ये जो कोएफिशिएंट दिया होछि से कोएफिशिएंट कोन कोन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बुझिला तो किछि नाही माने सेठी केते अछि 1 मोल आफ्टर द बर्निंग विथ ऑक्सीजन देन इट फॉर्म्स कार्बन डाइऑक्साइड केते मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 2 मोल ऑफ कार्बन ओके एबे समस्त साउंड आसुची एबे समस्त साउंड आसुची सॉरी टिके टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाइतिला ओके ओके साउंड आसु नथिला क्लियर से ओके क्लियर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट mass volume relationship means what how many liters of oxygen at STP are required to burn completely 2.2 gram of propane question कहूँ how many liters of oxygen at STP is what standard temperature and pressure standard temperature and pressure से कहूँ how many liters of oxygen at STP are required to burn completely 2.2 gram of propane propane केते burn होची C3H8 propane केते burn होची ना 2.2 gram बुझेला तो ताले आमे जानिचे अकॉर्डिंग टू द केमिकल रिएक्शन कंबशन ऑफ प्रोपेन को कंबशन करले कोन हबो C3H8 कंबशन विथ व्हाट ऑक्सीजन देन इट गिव्स व्हाट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर आमे जदि प्रोपेन को बर्न करिबा प्रोपेन को आमे बर्न करिबा कहा सहित ऑक्सीजन सहित C3H8 रिएक्ट विथ व्हाट ऑक्सीजन देन इट गिव्स व्हाट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस व्हाट वाटर बुझेला समस्त से कही प्रोपेन रो मॉलिक्यूलर मास केते 44 ग्राम हाँ ना नहीं
ऑक्सीजन रे केते बाहरची 112 लीटर ताले 1 मोल ऑफ आइडियल गैस ऑक्युपाइज केते 22.4 लीटर वॉल्यूम केते ना एसटीपी रे ताले 44 ग्राम ऑफ प्रोपेन रिक्वायर्ड केते ना 112 लीटर ऑफ ऑक्सीजनेटेड रिक्वायर्ड एसटीपी द कंप्लीट कंबशन ताले 2.2 ग्राम ऑफ प्रोपेन विल बी रिएक्ट केते ना 112 डिवाइडेड बाय 44 into 2.2 देन यू गेट व्हाट 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन बुझेला तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एसटीपी रिक्वायर्ड केते ना 2.2 ग्राम ऑफ प्रोपेन 5.5 लीटर क्लियर सत्यप्रकाश क्लियर शुभस्मिता सेठी क्लियर ओके चलो नेक्स्ट इज व्हाट मास रिलेशनशिप क्वेश्चन कौन कही ना व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर फॉर्म्ड by the combustion of 1.6 gram of methane what is the amount of water formed by the combustion of 1.6 gram of methane बुझेला तो मीथेन फॉर्मूला कौन CH4 react with what oxygen then it gives what carbon dioxide plus what water बुझेला तो क्लियर ओके एटी मीथेन रो मास केते 6 ग्राम है ना नहीं एटी केते मोल ऑफ अछि वाटर केते मोल ऑफ अछि एटी 2 मोल ऑफ वाटर ताले 2 मोल ऑफ वाटर हेले 2 into वाटर मोलिकुलर मास केते 18 U व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ वाटर 18 U बुझेला तो क्लियर ताले इन दिस रिएक्शन 1 मोल ऑफ मीथेन गिव्स 2 मोल ऑफ वाटर 1 मोल ऑफ मीथेन एटा केते मोल ऑफ अछि 1 मोल ऑफ after combustion then it gives what 2 mole of water this is the what 2 mole of water that means 16 gram of methane gives 2 into 18 gram of what water that means 16 gram of methane रो molecular mass केते 16 gram of methane जदि combine करिवो ताले केते दबो 36 gram of कोन water बुझियला समस्त को से पचाची कोन ना 1.6 gram of methane ताले 1.6 gram of methane केते हबो 36 divided by 16 into 1.6 ताले हम केते पाइबा 3.6 ग्राम वाटर बुझियला ना नहीं क्लियर समझते ओके चलो नेक्स्ट इज व्हाट वॉल्यूम रिलेशनशिप व्हाट इन बाय वॉल्यूम रिलेशनशिप क्वेश्चन इज व्हाट ना 5.6 लीटर ऑफ मीथेन गैसेस इज इग्नाइटेड इन ऑक्सीजन इग्नाइटेड मीन्स combustion with what oxygen combustion takes place that means 5.6 liter of methane gas is ignited in oxygen gas calculated the volume of carbon dioxide produced केते volume of carbon dioxide produce होची हमें जानले कोन volume of the gases at STP and NTP is what 22.4 liter एठी कहिची methane born होची का सहित oxygen सहित methane born with oxygen then it gives what carbon dioxide plus what water carbon dioxide plus water that means 1 mole of methane जेते बेले कंबाइन होची से कोन दोची 1 mole of carbon dioxide दोची बुझियला ताले जदी 22.4 लीटर of methane born होबो ताले से केते दबो 22.4 लीटर of carbon dioxide बुझियला जदी 1 mole of methane born होची 1 mole of carbon dioxide दोची ताले 22.4 लीटर जदी methane born होबो से केते दबो ताले 22.4 लीटर of what carbon dioxide similarly जदी से क्वेश्चन कोन पचारची 5.6 लीटर of methane gases is ignited ताले 5.6 लीटर जदी methane born होबो ताले से केते दबो 5.6 ग्राम of what 5.6 लीटर of what carbon dioxide बुझियला समस्त को सुस्मिता सेठी क्लियर सत्यप्रकाश क्लियर समझते से कौच 1 मोल ऑफ जदि मीथेन बर्न होची ऑक्सीजन सहित ताले 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 22.4 लीटर ऑफ जदि मीथेन बर्न होची ताले 22.4 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड सिमिलरली 5.6 लीटर ऑफ मीथेन जदि बर्न होबो 5.6 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट्स इट क्लियर तो ओके चलो नेक्स्ट इज व्हाट इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड्स एटा में जानिबा आगो एसिड्स कोन बेस कोन हला फर्स्ट इज व्हाट एसिड मीन्स व्हाट द सब्सटेंस which donate what H plus ion completely H plus ion the substance which donate completely H plus ion and base is what the substance which donate what OH minus ion बुझेला तो
दैट मीन दिस इज कॉल्ड व्हाट H प्लस आयन जदि डोनेट करछि ताले से कोन एसिड OH माइनस हेले कोन बेस ताले सेठी एठी कोन क्वेश्चन कोन कहिछि कॉन्सेप्ट हमर कोन कहिछि कॉन्सेप्ट कहिछि कोन ना इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड आम केमती काढ़ा इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड मीन्स गोटे एसिड रु केते H प्लस आयन्स कोन होछि डिसोसिएट होछि हाउ मच अमाउंट ऑफ H प्लस आयन डिसोसिएट फ्रॉम ए व्हाट एसिड दिस इज कॉल्ड व्हाट equivalent mass of acid. This acid is called what basicity of acid. Basicity of acid that means consider we take example hydrochloric acid HCl. HCl को जदि डिसोसिएट करबा से कोन दबो H प्लस प्लस Cl माइनस आयन है ना नहीं ताले केते नंबर ऑफ H प्लस आयन डिसोसिएट होछि 1 नंबर ऑफ H प्लस आयन बुझियला तो 1 नंबर ऑफ H प्लस आयन जदि डिसोसिएट हो ताले ताको कोन कहजो बेसिसिटी ऑफ एसिड बेसिसिटी ऑफ एसिड इक्वल्स टू व्हाट 1 बुझियला क्लियर से कहूची 1 ग्राम ऑफ मास ऑफ एन एसिड दैट मास एट व्हिच contain 1 ग्राम ऑफ इक्विवेलेंट मास ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट केते रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन डिसोसिएट होची गुटे एसिड रु सेटा को तार कोन कहै छै इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड ताले इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड हम केमती केडिबा हाउ कैन कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड इक्विवेलेंट मास ऑफ एन एसिड मींस the molecular mass of an acid divided by number of replaceable hydrogen ions. Equivalent mass of an acid is what? Molecular mass of an acid divided by number of replaceable hydrogen atoms. बुझेला तो क्लियर जेमती मुने भी सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 H2SO4 को डिसोसिएट कले कोन हबो 2H प्लस प्लस व्हाट SO4 2 माइनस ताले रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन केते 2 बुझेला रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 2 मीन हाउ कैन कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड केते व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 98 है ना नहीं 98 डिवाइडेड बाय रिप्लेसेबल हाइड्रोजन इज व्हाट 2 देन वी गेट व्हाट हाउ मच केते 49 बुझेला क्लियर सत्यप्रकाश क्लियर सत्यप्रकाश क्लियर सुस्मिता सेठी क्लियर ओके नेक्स्ट इज व्हाट नेक्स्ट विल डिस्कस व्हाट इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस ताले इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस मींस सेठी जदी इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड रे जदी गोटे एसिड रु नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयन होउतला ताकू ताले कोन कहतला बेसिसिटी ऑफ एसिड जदी OH माइनस सेठी रिलीज होबो ताकू कोन कोन एसिडिटी ऑफ ए व्हाट बेस ताले एसिडिटी ऑफ ए बेस मींस व्हाट हाउ मच रिप्लेसेबल OH माइनस आयन इज टेक्स प्लेस फॉर एग्जांपल वी टेक सोडियम हाइड्रोक्साइड को जदी डिसोसिएट करबा ताले से कोन दबो Na प्लस प्लस व्हाट OH माइनस आयन in this case replaceable OH minus ion is what 1 that means this is the called what acidity of the base clear so 1 gram of equivalent mass of a base that is the mass at which contain what 1 gram of equivalent mass of hydroxyl radical or hydroxyl ion clear so equivalent mass of base is called what molecular mass of the base divided by number of hydroxyl ions is present केतेटा जदि एसिड होबो ताले H plus ion को केते H प्लस आयन डिसोसिएट होची चेक करिबा जदि बेस होबो नंबर ऑफ OH माइनस आयन केते होची चेक करिबा जदि इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड काढिया पय कहिथिबो जो एसिड देथिबो से एसिड रो मॉलिक्यूलर मास काढिबो डिवाइडेड बाय केते H प्लस डिसोसिएट होची जदि इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस काढिया पय कहिथिबो मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस डिवाइडेड बाय हाउ मच अमाउंट ऑफ OH प्लस आयन इज डिसोसिएट बुझियला क्लियर चलो नेक्स्ट इज व्हाट इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट हाउ कैन कैलकुलेट इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट केमती फॉर्मेशन ऑलरेडी मु डिस्कस करथली ना अकॉर्डिंग टू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू व्हिच रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मींस व्हाट in an when acid react with what base then it forms what salt with what water that means in this case how can you calculate the equivalent mass of salt means what the simple salt that mass of which contains what 1 gram of the equivalent mass of what metal in this case number of metal गुटे आम जदि salt नेले एडी salt रे के metal present मु NaCl नेबी NaCl रे गुटे common salt this is called what common salt रे how much replaceable of metal ion is present only one that means this is what Na plus that means how can you calculate the equivalent weight of salt the molecular weight
molecular weight divided by number of metal into its valency. molecular आम NaCl नवा NaCl तार molecular weight ने भी divided by number of metals केतरा present अच्छी सोडियम मेटल केते अच्छी NaCl गोटे ताले 1 into सोडियम रो valency केते 1 बुझियला तो then we can calculate the what equivalent mass of salt. clear समझते? okay molecular mass केमती काढिबा? molecular mass means sum of all the atomic mass of the element present in a molecule. गोटे molecule केते number of elements present अछंती तांकर element रो atomic mass को sum करिले आमे जोटा पाइबा सेटा को आछे molecular mass. बुझियला? molecular mass means sum of all the atomic masses of the elements present in a molecule. for example मु नेबी कोन गोटे example आमे नै जिबा simple example water रो molecular mass केमती काढिबा? एडी हाइड्रोजन केतरा अछि दुईटा हाइड्रोजन रो atomic number केते 1 तार atomic mass केते 1 that means 2 into 1. next element is what? Oxygen. then plus how much number of oxygen element is present? 1 number of, that means 1. what is the atomic mass of oxygen is what? 16. that means we get what? 2 plus 16, then you get what? 18U. 18U is the what? molecular mass of water. similarly you can find all the molecules, all the compounds, all the elements. that means molecular mass means sum of all the atomic masses of the elements present in a molecule. clear? Susmita Sethi clear? चलो basicity of S3PO4 phosphate. S3PO4 रे एडी S3PO4 रे हमें कौन करिबा ना रिप्लेसेबल H+ आयन. रिप्लेसेबल H+ आयन केमती होबो? 3H plus what? PO4 minus 3H plus PO4 minus phosphate PO4 केते 2 minus. ताले एडी रिप्लेसेबल H+ आयन तीनटा होची केतरा होची? तीनटा H+ आयन. बुझियला तो? क्लियर? सुस्मिता सेठी क्लियर? next is what? Oxidation. Oxidation means in a chemical reaction addition of oxygen, removal of hydrogen, is called oxidation. in a chemical reaction addition of oxygen, removal of hydrogen is called oxidation. similarly we can say loss of electron also called oxidation. बुझेला? जदि गोटे एलिमेंट तार इलेक्ट्रॉन भी लॉस करूची ताले ताको आमे कोन कहि परिबा? ऑक्सीडेशन कहि परिबा. बुझेला? सिमिलरली जदि मु कहिबी रिडक्शन मीन्स व्हाट? addition of hydrogen, removal of what? Oxygen is called reduction. Or similarly we can say gain of electron is also called reduction. बुझेला तो? So in a chemical reaction addition of oxygen, removal of hydrogen is called oxidation. Or similarly we can say loss of electron is also called oxidation. And reduction means what? In a chemical reaction addition of hydrogen, removal of oxygen also called what? Reduction. Or we can say gain of electron also called what? Reduction. If both reduction and oxidation takes place simultaneously,
then this reaction is called what? Redox reaction. When both oxidation and reduction takes place simultaneously, is called redox reaction. बुझिएला क्लियर. तो ऑक्सीडेशन रे हमें कौन करिबा तो शॉर्टकट ट्रिक गोटे मन रखो ता कौन कहती ना ऑयल रिग. कौन कहती? ऑयल रिग. ऑयल रिग मीन्स व्हाट? ऑक्सीडेशन इज व्हाट? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. रिडक्शन इज व्हाट? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. बुझिएला. Oil rig shortcut rig is what? Oil rig. Oxidation is loss of electron. Reduction is what? Gain of electron. Removal of Vishwaranjan Raut. Removal of electropositive element. Removal of electropositive element कौन हम? जदि गोटे आम नहीं जिबा, जदि आम नहीं जिबा कौन? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट. फॉर एग्जांपल मैंने कौन? NaCl. NaCl जदि कौन करिबा? जदि कार्बोकेटायन फॉर्मेशन करियो. फॉर एग्जांपल मोड नेबी कौन ना CH3 एथरे कौन लगी? गोटे हाइड्रोजन ग्रुप लगी. बुझेला तो? बुझेला. हाइड्रोजन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. देन इट फॉर्म्स व्हाट? हाइड्रोजन इज व्हाट? X इज नेगेटिव, कार्बन इज व्हाट? पॉजिटिव. देन इट फॉर्म्स व्हाट? कार्बोकेटायन. The electropositive elements means this is called what? Carbocation. जदि electropositive elements formation होतुबो ताको कोन कहजो ताले? Carbocation. कोन कहजिबो? Carbocation. जदि electronegative element होतुबो कार्बोएनायन. बुझियला? क्लियर? सेठी कहउची ऑक्सीडेशन रिडक्शन. क्लियर? फॉर एग्जांपल नेबी जिंक react with copper 2+. Then it gives Zn2 plus what? Copper. That means Zn2 plus Cu2 plus 2 Cu. In this case zinc to Zn2 plus. Zn2 plus is charge is what? 2 plus. That means in this case Zn loses of 2 electron, the charge becomes what? Zn2 plus. Oxidation means what? Loss of electron. That means this is called what? Oxidation. In this case zinc lose 2 electron, then its charge becomes what? Zn2 plus. Copper 2 plus copper gain of 2 electrons, then it gives what? Copper. That means copper is what? Reduction in this case. That means in this case oxidation and reduction takes place simultaneously. That means this reaction is called what? Redox reaction. Redox reaction. बुझेला? oxidation reduction समझते clear? All of you clear about oxidation, reduction and redox reaction? चलो we take example. In this case redox reaction, in this case zinc oxide react with carbon. Zinc oxide react with carbon, then it forms what? Zinc plus carbon monoxide. That means zinc oxide to zinc, carbon to carbon monoxide. That means in this case carbon react with oxygen, then it forms what? Oxidation. Then it gives what? Oxidation. Zinc oxide to zinc, that means what? This is reduction. Clear? That means the substance which is oxidized, in this substance which one is oxidized? Carbon. Carbon is what? Oxidized. Carbon is oxidized. जो substance oxidized होबो ताको कौन कहा जाए ना? reducing agent. कौन कहा जाए? reducing agent. The substance which is oxidized, this is called reducing agent. The substance which is reduced, this is called what? Oxidizing agent. Oxidizing agent. बुझिएला? बुझिएला समस्त को? ताले एटी कौन कहूची? Zinc oxide react with carbon, then it gives zinc plus what? Carbon monoxide. Zinc oxide to zinc, that means this is reduction. Carbon to carbon monoxide, that means oxidation. Which substance is oxidized? Carbon is oxidized. If the carbon is oxidized, that means this is called what? Reducing agent. In this case zinc oxide is what? Reduced substance. Zinc oxide to, this is called form zinc, then zinc oxide is reduced, that means this is which agent? Oxidizing agent. Clear? Clear समझते? Okay. Similarly एटी कौन होची?
iron oxide react with carbon monoxide, then it gives iron plus carbon dioxide. ताले iron oxide to iron होची माने कोन loss of oxygen or loss of electron also. That means this is called what? Sorry, loss of gain of electron. Sorry, this form what? Gain of electron. बुझेला तो reduction, loss of oxygen, gain of hydrogen or gain of electron. ताले एटी कोन होची iron oxide to iron होची ताले एटी कोन होबो reduction, and carbon monoxide to carbon dioxide, this is what? Oxidation. Clear समझते? Okay, all of you clear? All of you clear about all the concepts of basic concept of chemistry? जो मैंने एबे लाइव्स अच्छो एबे रेगुलर क्लासेस रे शुभस्मिता सेठी ओके थैंक यू क्लियर एवरीथिंग तुमर एबे पेड बेच रे भी कोर्स रे क्लासेस रेगुलर चली अछि तुम जो मैंने भी चाहूचो पेड बेच रे कोर्स करिया पे एठी कांटेक्ट नंबर दिया हिची कांटेक्ट नंबर रे कांटेक्ट करले तुम जानिबो ऑफिशियल नंबर्स अछि आउ रेगुलर समस्ते एबे रेगुलर क्लासेस रे रुहो नॉट ओनली केमिस्ट्री क्लास अदर सब क्लासेस भी रहउची फिजिक्स क्लास बायोलॉजी क्लास पेडागोजी क्लासेस ओडिया क्लासेस इंग्लिश क्लासेस सब बहुत पीसीएम एंड सिविल स्टूडेंट मान के रेगुलर क्लासेस चलची बुझेला तो समस्ते चैनल को लाइक और सब्सक्राइब टिके करिवो हम रेगुलर कमेंट्स देले हमें जानिबू कोन केमती क्लासेस तुमको लागुची ओके थैंक यू समस्ते।